Hey everyone, how was your exam? प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट अगर मेरी वॉइस आपको अच्छे से आ रही है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से आ रही है। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। आई थिंक इट शुड हैव बीन वेरी इजी क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज़ें कल पढ़ी थी लाइव सेशन में वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही आई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद बाय टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट अगर मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है तो। आज हम लोग सारे सेट्स डिस्कस करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट विद पार्ट ए एंड फिर उसके बाद हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। वेरी इजी, अच्छा गया पेपर। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। So the first question was smart method can be used to set goals to make you successful in your career and personal life. So ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर से है। तो स्मार्ट में जो ए का मतलब होता है वो होता है अचीवेबल। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू शुड हैव। Which of the following is not a key element of self-management skills? कौन सा की एलिमेंट नहीं है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का? तो हम लोगों को यहां पर क्या देखना है, नेगेटिव चीज कौन सी है। यहां पर नॉट टेकिंग फीडबैक इज अ नेगेटिव थिंग, सो बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर्स? सो क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल ऑन्टरप्रनोर्स है तो मतलब पॉजिटिव चीज होगी कोई, तो ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। So hard working comes out to be the quality of a successful entrepreneur. The most important software in any computer is the dash. It is the operating system. सबसे important होता है. How many of you got this right? Which of the following types of communication takes place when one individual, जब कोई एक person addresses a large gathering? It is not written, it is not small group, it is not interpersonal, it is public communication. How many of you got this right? Most of you got the questions right. I think tricky questions नहीं है अभी तक. Organic farming is a technique of a green skill that is essential for sustainable agriculture. Also, organic farming technique prioritize environment friendly and sustainable practices such as using natural fertilizers, avoiding synthetic pesticides, and promoting soil health. What did you write for this question? Please answer in the chat. How many of you skipped this question? Yes, so A answer is actually right. दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. Which of the following contributes to the efficiency of an AI model? AI प्रोजेक्ट या AI मॉडल की एफिशिएंसी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो हमें एक पॉजिटिव चीज ढूंढनी है यहां पर, तो वो है रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डेटा. बाकी सब नेगेटिव चीजें हैं. सो बी इज द करेक्ट आंसर. हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब नहीं है कि आपका एआई प्रोजेक्ट बहुत एफिशिएंट होगा. इट डजंट मीन दैट. सो बी इज करेक्ट. रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ न्यूज आइटम और ब्लॉग पोस्ट while avoiding redundancy from multiple sources and maximizing the diversity of content obtained. What did you write for this? The correct answer is automatic summarization. Which of the following represent a machine that is smart but not considered AI enabled? A machine जो smart है but AI enabled नहीं है. A robot vacuum cleaner that can navigate and clean floors autonomously. So this is AI. Chatbot is AI. Smartphone is AI. So D is the right answer.
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ अ लेमा? केयरिंग का लेमा फाइंड आउट करना है, लेमा मतलब मीनिंगफुल वर्ड, सो ए ऑप्शन इज राइट. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज अ कंसेप्ट दैट, इंट्रापर्सनल मतलब आप खुद से बातें अच्छे से कर रहे हो, सो सेल्फ अवेयरनेस, यस, सी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस. जब हम लोग इंटरपर्सनल की बात करें तब ए ऑप्शन करेक्ट होता है, इसमें अभी सी ऑप्शन करेक्ट है. फॉर डेटा साइंस, डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो कौन सा फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट? CSV है, SQL है, स्प्रेडशीट है, बट वेबसाइट इज द करेक्ट आंसर. Dash is one of the parameter for evaluating a model's performance and is defined as a fraction of positive cases that are correctly identified. Fraction of positive cases that are correctly identified. What did you guys write for this? Someone's writing B, someone's writing A. Now इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अप्रोप्रिएट नहीं है. इन द फर्स्ट लुक ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी आंसर हो सकता है, बट यहाँ पर लिखा गया फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस, मतलब हमारे जो रियलिटी है उसके पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड अपॉन दिस. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स recall is the correct answer. But we can confirm this once the CBSE releases the answer key for this one, क्योंकि language थोड़ी confusing है for this question. In the AI project cycle, which of the following represents the correct order of steps? So सबसे पहले problem scoping आता है, कहाँ पर है? सिर्फ B option में problem scoping है. So B option is right. Dash is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and all these things. So statistics है मतलब calculations होने वाली हैं. So data science is the correct answer. In computer vision, which of the following tasks is used for multiple objects? Quickly in the chat, what did you write for this? सो क्लासिफिकेशन होता है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए. इंस्टेंट सेगमेंटेशन हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन चेक करते हैं, उनके पिक्सल्स फाइंड आउट करते हैं. लोकलाइजेशन से लोकल एरिया फाइंड करते हैं. सो क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन एज वेल एज इंस्टेंस सेगमेंटेशन आर बोथ राइट. अगेन यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, but according to me it should be B, because instance segmentation हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, बट क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन जब हम लोग कर रहे हैं. ओके, सो मोर अप्रोप्रिएट सीम्स लाइक C. B नहीं, C would be the right answer. In spam email detection, which of the following will be considered as false negative? स्पैम में false negative है मतलब गलत प्रेडिक्ट किया है कि स्पैम नहीं है, बट वो एक्चुअली स्पैम है. सो when a spam email is legitimately identified as not spam but false, so B and C, aren't they both the same options? Not marked as spam, which is actually false. So इसका मतलब है जो मेल है वो स्पैम है, बट वो मेन ईमेल में चला गया है. नाउ बी ऑप्शन इज करेक्ट.
email is inaccurately labeled as important, so D is also seems like a same option, but let's go with B. हम लोग आंसर की का वेट करेंगे. Which of the following applications is not associated with natural language processing? Stock market analysis. However, that can be done using NLP, but आपके syllabus के according D option is right. Confusion matrix is an evaluation metric. It is not an evaluation metric. It is actually a record. So statement 2 is correct, whereas statement 1 is incorrect. In which form of unsupervised learning does the following diagram indicate? Which form of unsupervised learning does the following diagram indicate? This is called clustering. A option is right. Bag of words is a dash model. कौन सा मॉडल होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP मॉडल है बैग ऑफ वर्ड्स. Which of the following represents an example of a recommendation system? A music streaming platform that suggests song and playlists based on user listening history. यहाँ पर retrieving हो रहा है, यहाँ पर display हो रहा है, and यहाँ पर offer हो रहा है. So the right option is D. Name any two search engines. Let's say Google, AOL. आपने क्या लिखा है? Please put in the chat so that I can know if you wrote the correct answer or not. What is the primary need for evaluating an AI model's performance in the AI model development process? Evaluation क्यों करते हैं? To assess how well the chosen model will work in the future. C option is right. IT का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे at 2:30 PM. The term used to refer to the number of pixels in an image is resolution. This is right. Number of pixels in an image is a resolution. And this is also right. And A option seems like the correct one. Correct explanation. Microsoft Bing is also right. When a machine possesses the ability to mimic human traits, that is, make decisions, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence की definition है. C option is correct. To evaluate a model's performance, we need either precision or recall. If the value of both precision and recall is 1, the F1 score is 0. This is false. This statement 1 can be right, but ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ precision और recall ही हो. हम लोग accuracy भी ले सकते हैं. So from your perspective, I think statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. The concept of dash is used to apply face filters on various social media platforms. कल discuss किया था हम लोगों ने computer vision. The 4Ws problem canvas helps in identifying the key elements related to a given problem. Which one of the following is not one of the blocks of the problem canvas? कौन सा नहीं है? When का जो question है वो नहीं है. Which domain of AI is used for interacting with virtual assistants such as Siri and Alexa? NLP से बहुत सारे questions पूछे गए हैं इस बार and very straightforward. अगर आपने machine learning लिखा है, that is also correct. I mean, from an AI perspective, that is correct, but we do not know what CBSE will mark it. So natural language processing would be the first correct option. उसके बाद machine learning would be the second correct option. Is Yahoo correct? Yes, Ashish, Yahoo correct answer था उसका. Give any two examples of how individual choices and behaviors can contribute in achieving sustainable development. Now इस time पे हम लोग part A के थोड़े subjective questions discuss कर रहे हैं. Now इसका एक correct answer नहीं होगा. Please let me know in the chat कि आपने क्या लिखा. You can save resources by judicious use या फिर
not waste natural resources. Sir, first 5 MCQs will be checked. आई एम नॉट श्योर बट एग्जामिनर हमेशा फर्स्ट जो आपने आंसर लिखा है वही चेक करता है. वंस एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं क्वेश्चन, उसके बाद एग्जामिनर चेक नहीं करता है. रिड्यूस ग्रीड कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज एवेल्यूएशन मैट्रिक नहीं. यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यस. दिस इज राइट. ओके. रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स. तो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. लिस्ट एनी 2 कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. दैट you need a lot of money, a lot of capital. This is a misconception. Entrepreneurs are born, not made. Third, that your idea should be unique. So बहुत सारे और भी हो सकते हैं, but इसमें से आपने कुछ लिखा है तो that would be right. What is the importance of time management in effectively dealing with stress? Provide one strategy for improving time management skills to reduce stress. You can prepare in advance. You can schedule your activities. Helps in इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी. बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. अगेन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो एक करेक्ट आंसर नहीं है. प्रोवाइड वन स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. प्लानिंग आउट योर डे, प्लानिंग आउट योर वीक कैन बी मल्टीपल थिंग्स. येस, मेकिंग द स्केड्यूल इज ऑल्सो राइट. इज दिस IT or AI? So this is AI. Can avoid distracting things. Yes. Questions are the same. I think IT के क्वेश्चन सेम हो सकते हैं. Mention 2 measures that individuals or organizations can take to protect their data from thefts and viruses. That is, update your antivirus software. That can be one thing. आपने वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरस इंस्टॉल किया है यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल, या फिर आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑल दीज थिंग्स. The method of communication that you choose could affect the relationship with your peers, superiors, and customers. Write 4 factors on basis of which you can choose the right method of communication. Your audience, urgency, cost, and feasibility. ये 4 चीज़ें हो सकती हैं. अगर आपने कुछ और लिखा है, that can also be right. I am getting 45. Blocking third-party websites can also be right. Differentiate between machine learning and deep learning. So machine learning से machines सीखती हैं by the use of data, and deep learning is a subset of machine learning where the machine takes up a lot of data. There can be multiple ways to write it. Write the primary differences between script bots and smart bots. Well, this is a question that was asked multiple times. So script bot और smart bot में आपको differentiate करना है. Script bot is something which is programmed. It is not very smart, whereas smart bot implements AI and uses a lot of data. What do you mean by evaluation of an AI model? Also explain the concept of overfitting with respect to AI model evaluation. Evaluation में हम लोग टेस्ट करते हैं कि how your AI model is performing. Just a moment, guys.
सो लेट्स क्विकली रिज्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन ऑफ एआई मॉडल? जब हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो एआई मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है बाय द यूज ऑफ वेरियस मेट्रिक्स एंड हाउ इट विल परफॉर्म इन द फ्यूचर. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग? जब आपका एआई मॉडल सारे डेटा पॉइंट्स पे फिट कर रहा है अच्छे से बट इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल ऑन द टेस्ट सेट. अगर आपने इसका एक ग्राफ बनाया होगा दैट इज ऑल्सो ओके. जब आपका एआई मॉडल जो है सारे पॉइंट्स पे एग्जैक्टली फिट करता है दैट इज नोन एज ओवरफिटिंग. For healthcare organizations' objective of predicting disease or outbreaks. Okay, what was this question? Would you recommend using unsupervised or supervised learning? Explain your choice briefly. तो हमें क्या predict करना है? Disease outbreaks and efficiently allocating resources through the analysis of medical records. Okay. Would you recommend unsupervised or supervised learning? Now, अगर आप supervised learning लिख रहे हो, which means your data is labeled because you are using past records. अगर आपने इसमें से कुछ लिखा है that is correct. Please let me know your answers. दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं यहाँ पर. अनसुपरवाइज्ड भी आप लिख सकते हो बट यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट रीजंस. अगर आप अनसुपरवाइज्ड लिख रहे हो देन यू नीड टू से दैट you're detecting patterns in the medical records. दोनों ही आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं बट मेक श्योर यू गिव द राइट आंसर्स, राइट रीजंस. What role does data play in AI based applications? Name two any sources of online data collection for building an AI based application. So data is very necessary for any AI based application. That's how the AI machines learn. Name any two sources of online data collection. You can say government websites, online forms, open source data. Moving on, what are neural networks? Neural network क्या होता है? They are created on the model of human brain or neurons. आपको neurons mention करना था. Based on neurons, which helps the machine learn efficiently. तो आपको दो points mention करने थे. Briefly explain all the layers. First is input layer, second is hidden layer, and the third is output layer. Input layer से आप data लेते हो, hidden layer में data process होता है, and output layer में आप data output करते हो. Very simple and straightforward. Give any 4 examples of applications of AI that we see around us. Now इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो. No single correct answer. आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स लिख लो, फेशियल रिकग्निशन लिख लो, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग लिख लो. All these answers can be correct. Consider the following two documents. ML and DL are part of AI. DL is a subset of ML. Implement all 4 steps of bag of words. First is text normalization. Text normalization में हम लोग क्या करेंगे? ML so let's quickly solve this. ML लिखा, सब स्मॉल में होना चाहिए. पार्ट ऑफ AI. ओके, सेम चीज आप सेकेंड डॉक्यूमेंट के लिए भी करोगे. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल क्रिएट अ टेबल. नाउ यू विल राइट डाउन ऑल द यूनिक वर्ड्स. अब यूनिक वर्ड्स कौन से हैं? ML यूनिक है एंड यूनिक है. हम लोग यहाँ पर स्टॉप वर्ड्स नहीं निकाल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि हमारा जो कॉर्पस है बहुत छोटा है. ML एंड DL आर पार्ट ऑफ AI. ओके, DL है, इज नहीं है, A भी नहीं है,
Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. टोटल 10 कॉलम्स बनाएंगे एंड उसके बाद देर विल बी 2 डॉक्यूमेंट वेक्टर्स D1 एंड D2. सो जो भी वर्ड्स फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे उसके अंदर हम लोग 1 डालने वाले थे एंड जो भी वर्ड्स नहीं आ रहे थे उसके अंदर 0 डालेंगे. सो दिस इज हाउ यू शुड डू इट. 3 स्टेप्स. बट अगर आपका टेबल करेक्ट है, आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया है अपने सारे वोकेबलरी को, अराउंड 10 वर्ड्स आ रहे हैं. So that would be the right answer. If you have skipped it, well and good. Consider the following graphs that demonstrate the two types of supervised learning models of artificial intelligence. Okay. Identify and explain each model, giving suitable examples of each. So ये क्या है? This is classification. ये क्या है? This is regression. क्लासिफिकेशन में वी हैव प्री डिफाइंड लेबल्स. जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं अपने डेटा को इन 2 और मोर क्लासेस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन. आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. रिग्रेशन इज supervised learning model that works on continuous data where we predict a value or a number. अगर आपने ये लिखा है, you will get the marks. It works on continuous data. A binary classification model has been developed to classify news articles as either fake news or real news. Okay, एक confusion matrix दिया गया है हमको. How many total cases are true negative? True negative basically क्या है? Predict negative किया था and reality भी no थी. So 420. Nice. Calculate precision recall and F1 score. Precision would be 45 upon 60. Recall would be 45 upon 65. F1 will be 2PR upon P plus R. नाइन बाई 13 को आप कर सकते हो. 0.7 या 0.68 के अराउंड आना चाहिए. आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस वैल्यू. प्लीज कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हो. प्रेसिजन इज 0.75 एंड द नेक्स्ट वन इज 0.679. ओके. कैपिटल में लिखा तो कितने मार्क्स कटेंगे प्रियांशु? आई थिंक हाफ मार्क कट सकता है आपका, बट लेट्स सी. अगर आपने करेक्टली टेबल बनाया, करेक्टली डॉक्यूमेंट वेक्टर्स लिखे हैं, क्या आप परसेंटेज में लिख सकते हैं? परसेंटेज में अगर आप लिख रहे हो गलत नहीं होगा, बट इट वॉज मैंशन कि जनरली आप 0 से 1 के बीच में ही वैल्यूज लिखो. ऑल राइट, सो विद दिस वी हैव डिस्कस द आंसर की. आई होप अब सबको अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे. And if you're choosing computer science, artificial intelligence or IP in your class 11th, I will see you on this channel. But all the best अगर आप कोई भी दूसरा option subject choose कर रहे हो. What if we remove stop words? It is okay अगर आपने stop words remove कर दिया because it is a process, but generally mention नहीं होता. Alright guys, thank you guys. I'll be seeing you in class 11th if you should join us. Thank you guys. Bye-bye.